Good morning to all. Today is our 16th episode and thank you very much for giving us huge response during our previous 15th episode. Every Sunday we are trying to bring something new and today's topic is also very interesting. What is that? Exploring physics in biology. So today's topic is very interested physics and the biology, how they are correlated. Now I am introducing Chaitanya Mungi and Shraddha Bhurkunde who are going to conduct this today's session. Dr. Chaitanya Mungi has completed his PhD from the IISER Pune and last 3 years he is deeply involved in various outreach activities of the IISER Pune. Shraddha, she has also completed her BS MS degree in the IISER Pune and last 1.5 years she is also involved in various outreach activities of the IISER Pune. Without any further delay, I would like to request Chaitanya, please start our today's session. So, hi, hello everyone. My name is Chaitanya and today we'll be looking at this session called Exploring Physics in Biology. So, mainly the idea of this session is to understand how physics governs some principles or some ideas in biology and how we see something in biology which has a connection with physics. And mainly the point of the overall idea would be that physics, chemistry, biology, we learn it separately in our books, but they all work together in an interdisciplinary manner when we are actually looking at real life things. Okay. So, in this particular session, in today's session, the first topic that we'll look at is actually lenses and how lenses work in general and how these lenses affect the way we see things. Okay. So, all of you have seen this. Okay. This is a magnifying glass. So, most of you must have seen a magnifying glass or played with a magnifying glass. So, all those who know or played magnifying glass, please write magnifying glass OP in chat so that we know that you all know what magnifying glasses are. And what you actually see with magnifying glass is something like this. So, it might have rained today, so we didn't know, we have pre-recorded some videos. तो आप ये एक वीडियो देख लीजिए जिसमें आपको पता चलेगा कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास एग्जैक्टली करता क्या है. ओके, सो इट्स अ सिंपल वीडियो जहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ब्यूटीफुल फ्लावर था जिसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं. एंड व्हेन यू सी इट थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास यू कैन सी दैट द इमेज इज बिगर, इट्स मैग्नीफाइड. ओके, तो आप बेसिकली कर क्या रहे हो जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास से कोई ऑब्जेक्ट देखते हो. सो यू आर एक्चुअली लुकिंग एट इट लाइक दिस. सो द फर्स्ट लेंस जो है वो ऑब्जेक्ट के पास में होती है एंड देन यू ट्राई टू मूव इट बैक एंड फोर्थ so that the image becomes bigger or smaller. Okay, so that's how you use magnifying glass. I'm pretty sure all of you must have used magnifying glass before, but what I'm trying to make you observe, मैं आपको ये नोटिस करने की कोशिश करने को बोल रहा हूँ कि जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास से कोई चीज देखते हो तो आप उसे आगे पीछे करते हो and that's how you see the image which is magnified. But a magnifying glass also has a very interesting behavior. तो अगर इस मैग्नीफाइंग ग्लास को आप पास में ना पकड़ते हुए दूर पकड़ते हो, थोड़ा सा ऐसे दूर पकड़ते हो and once you hold it far away from you and you are trying to look at the image which is formed from magnifying glass, when it's held far away from you, you will see something very interesting. Okay, so इसका भी हमने एक फोटो लेके रखा हुआ है. What you see here is the first image on the right side is the normal image that you are seeing from your eye. And okay, so we'll try to do what some YouTubers try to do. So those who know, write rider OP in chat. So what you are seeing here is this is your actual image. Okay, and when you hold a lens far away from you and you hold it far away, so what happens is actually now you are seeing the lamp post or the bigger lamp which is there, all of them look inverted. Okay, so actually a convex lens when held far away gives you a inverted image. So we saw two behaviors of a convex lens. This is the magnifying glass actually is called convex lens. तो इस convex lens के हमें दो behavior दिखे. एक तो जब हम उसको पास में पकड़ते हैं तो हमें चीजें बड़ी और मैग्नीफाइड दिख रही है, और अगर उस लेंस को हम दूर पकड़ते हैं तो हमें चीजें उल्टा और मतलब इन्वर्टेड दिख रही है और थोड़ी सी छोटी दिख रही है. सो व्हाई दिस हैपेंस इज समथिंग दैट वी कैन सी हियर. सो आई एम प्रीटी श्योर आप में से बहुत से लोगों को रे डायग्राम्स इतने पसंद नहीं आते रहेंगे, बट ट्रस्ट मी इन टुडेज सेशन वी विल ट्राई टू सी हाउ रे डायग्राम्स आर ब्यूटीफुल एंड हाउ वी कैन यूज देम फॉर आवर एडवांटेज. सो इस रे डायग्राम में आप ये देख सकते हो कि जब लेंस को आप ऑब्जेक्ट के पास में पकड़ते हो, सो व्हाट यू सी इज एक्चुअली कॉल्ड अ वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज. ठीक है, तो आपको एक वर्चुअल इमेज दिख रहा है क्योंकि अब वो इमेज वर्चुअल क्या होता है हम बाद में देखते हैं. एंड व्हाट यू आर सीइंग इज अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ दैट. एंड इन द अदर सेंस व्हाट यू सी इज अ रियल बट अ इन्वर्टेड इमेज. सो जब लेंस दूर होती है और ऑब्जेक्ट लेंस से बहुत दूर होता है, सो व्हाट यू सी इज अ इन्वर्टेड इमेज.
So to understand all this, what we'll do is we'll actually use a FET simulation. Okay, so FET simulation क्या है ये आप में से कितने लोगों को पता होगा? अगर आपको नहीं पता है तो please I'll show you how to look for FET simulation as well. And those who know FET simulation, please write in chat that if you have used any FET simulation before. And so I'll now switch to Chrome where this is basically a FET simulation. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो FET simulation है, you can just search for PHET FET simulation on Chrome like this, and in the FET simulation we will be using the simulation in physics. So we'll go to simulations and we go to physics. Okay, so in physics we are looking at a simulation in light. So we'll go to simulations in light, and today we'll be using this particular simulation which is called geometric optic. Okay, so we'll click on geometric optics, sorry, it's geometric optics, and you click on this. So if you are opening it for the first time, this particular simulation works on flash player, so you have to enable the flash player. You will get an option somewhere up here, and this particular simulation is very interesting. तो यहाँ पर बहुत बेसिक सा एक सिमुलेशन है. यहाँ पर ये जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है ये वाला, वही लेंस बीच में रखा हुआ है. You can see the lens here, and I think yeah, I might come in the middle of simulation. So what I'll do is I'll move myself a little. Yes, so I'll just move myself somewhere here so that now I'm not interfering anywhere in the simulation. And now what we can do here is once you look at these images, इसको ये move me बोल रहा है. Okay, this is actually your object, so you can move the object up and down. Okay, so if you move the object up and down, आप object को ऊपर नीचे कर रहे हो और ये साइड पे आपको जो दिख रहा है वो उस object का image है. Now what are these white lines? The white lines are actually the rays which are coming from the object. These rays go into the lens and these rays converge at the other point where the image is actually formed. Now in real life we don't see rays or anything. In real life we actually see something like this. So आप यहाँ पे object move कर रहे हो और वहाँ पे image जो है वो छोटा या बड़ा हो रहा है. But in order to understand why the image is formed somewhere, we'll need those rays. And also in reality a single object is giving many rays, so it's actually very crazy and chaotic like this. But इसमें हमें ज़्यादा समझ में नहीं आएगा. So what we'll do is we'll stick to this marginal rays. Marginal rays ये कर रहा है कि 3 rays डाल रहा है जो उस यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो कि वहाँ पर वो लेंस के ऊपर और नीचे और वहाँ से आ रहा है. Now what we are now looking at is how a object behaves when you hold it very close to the lens. So ये हमारा convex lens है और हम convex lens को as a magnifying glass की तरह ऐसे use कर रहे हैं. तो जब हम उसको ऐसे यूज कर रहे हैं तो the object is very close to the lens. Okay, it's something like this. So जब वो लेंस के बहुत पास में आ रहा है, where is the image? Okay, where did the image go? We can't see the image anywhere, right? Why is that the case? is क्योंकि rays जो है वो rays image से बाहर, ये rays जो है वो बाहर जा रहा है, diverging है, जिसकी वजह से हम image देख नहीं पा रहे. So यहाँ पर ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखेगा virtual image करके, and this virtual image is an option where what you can see is if I turn this virtual image on, अब आपको दिखेगा कि इसका virtual image form हो रहा है. Okay, what is the virtual image? Is their eyes are actually seeing a image which is not really there. Your eyes are backtracking those rays coming from that object and it's giving you a magnified image. So what you see is a virtual magnified image of the object when the lens is held very close to the object. जब lens object के बहुत पास में होता है और आपको बड़ा image दिखता है, it's actually called a virtual image. Now what happens if you take the object away from the lens? आप lens से object को दूर लेके जाते हो. तो यहाँ पर देखिए convex lens जो होता है इसका जो behavior है या फिर उसमें light कैसे जाता है वो बहुत interesting होता है. You take this away from the lens and the image becomes bigger and bigger and bigger until a particular point जो उस lens का focal length होता है या फिर focal point होता है. And at that focal point if you keep the light or if you keep the object, you get almost parallel rays coming from the object. And once the object goes away from that point, you will see that now you start forming a inverted image. So अगर आप lens को किसी object से दूर 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 लेते जाते हो ऐसे, and now when the object is very far away, you will actually see that the image formed is inverted. So this is how a lens typically works. And there is also other interesting behavior कि अगर मैं object को ऊपर लेके जा रहा हूँ तो image नीचे जा रहा है, अगर मैं object को नीचे लेके आ रहा हूँ तो image ऊपर जा रहा है, अगर मैं object को आगे या पीछे लेके जा रहा हूँ तो image उल्टा हो रहा है. If I come close to the lens, the image is going far away. If I go away from the lens, the image is coming towards the lens. Okay, so ये simulation बहुत ही interesting है. You can play with this simulation. You can check what all different things happen in this simulation. The other thing that we can also change is actually the curvature. Okay, यहाँ पर एक curvature करके एक option है.
So what this option does is, if you lower the curvature, it makes the lens fat. Okay, वो lens को thick बना देता है, and if you increase the curvature, वो lens को thin बना देता है. Okay, so you can see that by changing the curvature also, you can change the relative position of the image. Why this happens is, for those जिनको focal length क्या है पता है, एक fat lens जो है, अगर एक बड़ा curvature वाला lens है, तो उसका focal length दूर होता है, जिसके वजह से you can see, fat lens has a focal length which is close to it, thin lens has a focal length which is away from it. So what you can see here is, when I change this, जब मैं curvature बदल रहा हूँ, तो ये जो x दिख रहा है यहाँ पे छोटा सा, ये भी change होता है. Okay, remember this point that the thickness of the lens determines the focal length. ये point बाद में काम आएगा. Okay, so now we'll see again that when it's okay, I mean we are talking about a convex lens, we are talking about how a lens works and everything, but why are we doing all this? Okay, मतलब इन सब का point क्या है, ये सब हम क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं. So what we'll now look at is something which we actually see in our eyes. Okay, so if you see a particular image that I am about to pull up, our eyes have a convex lens. Okay, so when I was looking through the lens like this, और जब मैं किसी object को देख रहा था, तो actually कितने lenses हमारे बीच में आते हैं. So for those who guessed it, it's correct. There is one convex lens here. Now I am wearing specs, मुझे चश्मा है, तो मेरे पास और एक एक्स्ट्रा लेंस है. पर बाकी नॉर्मल केस में आपके पास लेंस होती है, फिर आप इस कॉन्वेक्स लेंस से आने वाली लाइट अपने आंखों के बीच में जो लेंस है उसमें फोकस होता है, एंड दैट इज हाउ इट रीचेस द रेटिना. ओके, सो रेटिना इज द पार्ट विच एक्चुअली फॉर्म्स द इमेज. आप इस इमेज में देख सकते हो कि देयर इज अ लेंस एंड देयर इज अ रेटिना. So this retina is actually what is forming the image, and how a image is actually formed is something like this. Okay, so you have say this lightning bolt, या फिर कोई भी एक object है जो बहुत दूर है, उस object से आने वाले rays आते हैं. जैसे हमने उस पहले वाले simulation में देखा कि आने वाले rays को एक lens focus करता है, और ये focus होने के बाद वो जो image है वो retina में form हो रही है. So as you can see in that particular image here, there is a light coming like this. The lens focuses those lights or rays, and then you form an image on your retina. Now this is very interesting and this is very much fun to observe. तो हम ये देखने के लिए कि आंखें कैसे लाइट फोकस कर रही है, इसके लिए हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे. सो आप घर बैठ के ये कर सकते हो, एंड आई एडवाइज ऑल ऑफ यू टू ट्राई दिस आउट. आपको ये करना है कि आपको एक उंगली आपके नाक के सामने पकड़नी है. ओके, एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज फोकस ऑन दैट फिंगर. ओके, एंड एज यू फोकस ऑन दैट फिंगर, द बैकग्राउंड विल बी ब्लर्ड. जब आप इस फिंगर पे फोकस कर रहे हो दोनों आंखों से ऐसे, तो बैकग्राउंड थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा. And now when you look at the background, तो finger blur हो जाएगा. Okay, so this is very interesting. Our eyes, when you look at the finger like this, our eyes are actually focusing on the finger. So this lens is slightly changing and focusing on the finger. पर पीछे का जो side है वो blur होता जा रहा है, और जब आप पीछे देख रहे हो तो आगे का जो image है वो blur हो रहा है. So to try this even in a more sophisticated or a complex manner, थोड़ा सा इसको और अच्छे से try करने के लिए हम क्या करेंगे, दो finger लेंगे. Okay, so we'll put two fingers like this, one close to you and one away from you, and what I want you to do is hold two fingers like this. दो उंगलियां लेनी है, एक पास में है एक दूर है, और एक आंख बंद कर देनी, कोई भी एक आंख. ओके, इट डजंट मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता दाई आंख है या बाई आंख है, एक आंख बंद कर देनी है और उसको ऐसे देखना है. एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज विद अ सिंगल आई, एक आंख से पहले इस उंगली पे फोकस करना है और फिर इस उंगली पे फोकस करना है. ओके, सो पहले इस पे फोकस कीजिए, पहले इस पे, बाद में इसमें फोकस कीजिए. सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज समथिंग लाइक दिस. हमने उसका एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो बना के रखा हुआ है. नाउ यस, वी आर डूइंग दिस विद अ कैमरा, बट यू हैव टू ट्राई इट विद योर सिंगल आई ऑफ योर्स, कि पहले एक उंगली पे फोकस करना है, फिर दूसरे पे करना है, पहले एक पे करना है फिर दूसरे पे करना है, एंड यू विल रियलाइज दैट दिस इज वेरी इजी टू डू फॉर अ सिंगल आई. अब आप दोनों आंखें खोल के भी ये ट्राई कर सकते हो, वो आपको थोड़ा सा ट्रिपी और अजीब दिखेगा, पर अभी के लिए हम सिर्फ ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपको एट अ टाइम या तो पास वाली उंगली फोकस में दिखेगी या दूर वाली उंगली फोकस में दिखेगी. ओके, इट्स समथिंग लाइक दिस. यू ईदर सी द फिंगर क्लोज टू यू इन फोकस और फिंगर अवे फ्रॉम यू इन फोकस. एंड व्हाई दैट इज द केस is that when your eye focuses on something, okay, your retina's position is fixed, your lens's position is fixed. So retina और lens के बीच का distance जो है वो तो change नहीं हो पा रहा है, but we can actually see the image in focus everywhere, whether it's far away or whether it's close. तो image जो है वो हमेशा हमें focus में दिखती है, object पास में होगा या दूर होगा उससे फर्क नहीं पड़ता है. तो ये जानने के लिए फिर से हम हमारे FET simulation पे वापस जाते हैं. Okay, so we'll go back to our FET simulation, and what you are seeing here is basically this particular lens. So हम क्या करते हैं, हमें एक थोड़ा सा भी मैथमेटिकली ये करना होगा, तो हम एक स्क्रीन लाते हैं.
Okay, so this is our screen. I can move the screen back and forth. I can also move the light back and forth. Okay, और हम यहाँ पे एक ruler रख देते हैं. So this ruler will allow us to see where our screen is. तो हम यहाँ पर इस ruler को lens में 0 arrange करके रख देते हैं. Okay, and we'll keep our screen somewhere at around 100. तो हमारा screen roughly 100 पे है और हमारा lens जो है वो 0 पे है और हमारा screen जो है वो retina represent कर रहा है, हमारी आंखों का retina है और जो लेंस है वो हमारी आंखों का लेंस है. और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब आपको बोला गया था कि पास वाली उंगली पे फोकस करना है, सो व्हाट हैपेंड इज दिस ऑब्जेक्ट केम क्लोज. तो ये ऑब्जेक्ट क्लोज था और जब ये ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ क्लोज था तो यहाँ पर देखिए ये एक फोकस पॉइंट पे आ गया. सो व्हेन यू हैड द फिंगर व्हिच इज इन फोकस विद वन आई, सो व्हाट योर आई वाज डूइंग इज इट वाज एडजस्टिंग द लेंस इन सच अ वे दैट द फोकस इज ऑन द इमेज फॉर्म्ड इज ऑन द रेटिना. बट व्हेन यू हैड द ऑब्जेक्ट फार अवे, तो जब ऑब्जेक्ट दूर जा रहा था तो ये दूर चला गया. तो अब आप देख सकते हो कि इमेज जो है ये तो आगे आ गया. सो योर आई व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फार इट कांट फोकस ऑन इट एनीमोर. इज इट द केस? नॉट रियली. तो हमारी आंखें जो है वो दूर की चीजें भी बड़ी आराम से देख लेती है. और ये कैसे होता है कि यहाँ पर ऊपर देखिए जो हमने लेंस कर्वेचर की बात की थी. सो अगर मैं लेंस का कर्वेचर चेंज करता हूँ, सो सी वॉइला यू कैन चेंज द इमेज वेयर इट फॉर्म्स by changing the curvature without changing where the object is. So जब आपकी उंगली बहुत दूर थी और आप उस पर फोकस करना चाहते हो और जब आप उसको पास में ला रहे हो, so what your eyes are actually doing is every time the object is far away or closer to you, it's actually changing this curvature. तो अब इस पॉइंट पे अगर लैंप यहाँ पे है तो ये कर्वेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा and you again see it in focus. If the object is very far away, it goes even further. तो अगर ये ऐसे दूर जा रहा है तो यहाँ पे कर्वेचर फिर से थोड़ा सा एडजस्ट होगा एंड इट विल अगेन बी इन फोकस. अगर ऑब्जेक्ट सडनली बहुत पास में आ गया, समथिंग लाइक दिस, ओके, इफ द ऑब्जेक्ट कम्स क्लोज लाइक दिस, देन योर आईज लेंस बिकम्स थिकर एंड यू विल अगेन सी इट इन फोकस लाइक दिस. ओके, अब जब हमने दो उंगलियां पकड़ी थी ऐसे तो क्या हो रहा था? ओके, सो नाउ विल ऐड अ सेकंड पॉइंट हियर. नाउ द रेज आर लुकिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सो विल रिमूव दिस फॉर नाउ. और ये ब्लू वाला जो है, ये ब्लू वाला इमेजिन कीजिए आपकी पास वाली उंगली थी और ये जो रेड वाला है, ये देखिए ये रेड वाले का इमेज आपको मूव होते हुए दिख रहा है. सो रेड वाला नीचे है, ब्लू वाला थोड़ा ऊपर है. ओके, सो जो चीज ऊपर है उसकी इमेज नीचे फॉर्म होगी, जो चीज नीचे उसकी इमेज ऊपर फॉर्म होगी. तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये ऊपर वाला इमेज रेड वाले का इमेज है और नीचे वाला जो है वो ब्लू वाले का इमेज है. सो नाउ व्हेन यू हैड टू फिंगर्स एंड मैंने आपको बोला था कि एक फिंगर पे फोकस करना है और फिर दूसरे पे करना है. सो वो आपकी आंख कर क्या रही थी कि पहले जो पास का ऑब्जेक्ट है उस पर जब आप फोकस करते हो, so your eye becomes thick, right? So the lens becomes thick and it's something like this. तो ये देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट है, छोटा पॉइंट ये वाला, this is the image of the close by object and when you go further तो ये ऐसे zoom हो जाएगा and now you can focus the finger which is far away from you. So at a time you can either get this sharp point or this sharp point and not both simultaneously. So this is the reason why you actually see the image in particular way, that you can either see the image which is close to you or far away from you but not simultaneously both of them. So ये हो क्या रहा है? तो इसके लिए एक छोटा सा इमेज है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि लेंस जो होता है, so we also have this small just two plastic strips which are stuck together which you can push like this. तो आई में जो लेंस होता है वो लेंस जब पास की चीजें देखना चाहता है तो आपके मसल्स उसको ऐसे पुश करते हैं and it becomes thicker. Okay, you can see it here, this becomes thicker, which is what the near point is. यहाँ पर आपको नीचे जो near point दिख रहा है और जो फार पॉइंट है जो दूर होता है उसमें लेंस पतला हो जाता है और दूर से आने वाली चीजें हमारी रेटिना पे फोकस हो पाती है. सो द मेन आइडिया ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन और दिस सिमुलेशन इज अ कॉन्वेक्स लेंस बिहेव्स इन अ पर्टिकुलर वे और वही कॉन्वेक्स लेंस हमारी आंख में होती है. सो नो मैटर हाउ वेयर इट इज लोकेटेड, इट्स स्टिल अ कॉन्वेक्स लेंस एंड इट विल एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे. सो हम ये जानने की कोशिश करते हैं, फिर ये हम इस सेशन से ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि हाउ अ कॉन्वेक्स लेंस वर्क्स, how our eyes have a lens which can change focus, and when the eyes lens changes focus, how this allows us to see objects which are very far away from us or very close to us without actually losing the focus of that object. Okay, so this was regarding the eye, and the next session is the next part of the session is actually about joints. So we have joints in our body at various places and all of these joints move very beautifully. तो ये आपको श्रद्धा बताएगी, पर इसके पहले मुझे गिनी पिग की तरह यूज किया गया था आपको joints के various movements दिखाने के लिए. So in that time enjoy the video of me doing movements of various joints.
Hi everyone. So as Ashok sir has introduced me, I am Shraddha and I hope, thank you Chaitanya for being the guinea pig for my activities. तो आपको ये वीडियो देख के पता चला होगा कि हम आज मूवेबल जॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं. जिनको जॉइंट्स ऑलरेडी पता है उनको समझ गया होगा हम कौन से जॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं. बट द आइडिया इज टू टॉक अबाउट जॉइंट्स नॉट फ्रॉम अ सिंगुलर पर्सपेक्टिव. सिर्फ बायोलॉजी के तरीके से नहीं देखना है. आज हम उसे फिजिक्स और मैथ्स के तरीके से भी देखेंगे विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी वो कितने एक्सटेंट तक मूव हो पाते हैं, कैसे मूव हो पाते हैं, वो हमें ऑब्जर्व करना है. तो जिन्हें जॉइंट्स नहीं पता है, एक 7th स्टैंडर्ड में हम टॉपिक पढ़ते हैं जॉइंट्स का, उनके लिए मैं क्विक रिवीजन देती हूँ कौन से ये 5 टाइप के जॉइंट्स हैं और उनकी किस तरीके की मूवमेंट है. आपको नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है. द पॉइंट इज टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि आपको इनकी मूवमेंट देखनी है, कितने टाइप की मूवमेंट होती है वो देखनी है. ओके, सो हम अगेन चैतन्य को यहाँ पे यूज करेंगे. सो हम सबसे पहले जॉइंट के बारे में बात करते हैं जो होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ये हमारे शोल्डर्स और हमारे हिप्स के जंक्शन पे यहाँ पे होता है, राइट. सो लेट्स लुक एट द जॉइंट फर्स्ट. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट मूवमेंट जहाँ पे ये आगे और पीछे मूव कर रहा है. दूसरा जो है, यस, हाँ, इसमें अब ये साइडवेज मूव कर रहा है, राइट. और यस चैतन्य, नाउ ही इज डूइंग द थर्ड मूवमेंट. सो हमने सेम जॉइंट से 3 मोशन किए हैं एंड ही विल डू द लास्ट वन. सो द फोर्थ वन जहां पे वो एक ही एक्सिस में रोटेट कर पा रहा है. तो हमने एक सिंगुलर जॉइंट से डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट किया. अब ये क्या जॉइंट है इसको हम एक बार देखते हैं, बट उससे पहले आप ये एक्सरसाइज घर पे करके देख सकते हैं. आप आपका हाथ कंप्लीटली नीचे से ऊपर तक लेकर जा सकते हैं, लेकिन अगर आप ये आपके पैर के साथ ट्राई करेंगे तो ये नहीं हो पाता है, राइट. सो व्हाई दैट हैपेंस इज हमारे यहाँ दोनों यहाँ सेम जॉइंट होते हुए भी व्हाट इज द डिफरेंस और व्हाट मेक्स द डिफरेंस इज एक्चुअली द डेप्थ ऑफ द सॉकेट. इसका मतलब क्या कि अभी अगर मैं यहाँ पे 2 मॉडल यूज करती हूँ, ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिख रहा है क्योंकि ये ग्रीन कलर का है. सो अगर आप इन 2 सॉकेट को कंपेयर करेंगे तो इसको मोटा मोटा देखिए, इसकी डेप्थ काफी ज्यादा है कंपेयर टू दिस वन जो काफी शैलो है, राइट. आप इसको साथ में कंपेयर कर सकते हैं, जिस वजह से इसकी डेप्थ कम होने की वजह से कम मूवमेंट कर पाता है जो आपके पैरों के साथ होता है, ऑन कॉन्ट्ररी टू योर हैंड विच कैन गो ऑल द वे अप, राइट. सो सेम जॉइंट होते हुए भी डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके स्ट्रक्चर से चेंज हो गया, राइट. सो अब अभी हमने देखा ये ऑलराउंडर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. इसके बाद हम अभी देखते हैं जो नेक्स्ट जॉइंट है विच यू मस्ट बी फेमिलियर विद, विच इज अ हिंज जॉइंट, लाइक द हिंजेस ऑफ योर डोर. ये कैसे मूव हो रहा है एक सिंगल प्लेन के अंदर. जिनको प्लेन की आइडिया समझ में नहीं आती है, जस्ट गिव मी 2 more minutes, आफ्टर वी हैव अ रिकैप वील अंडरस्टैंड कि एक प्लेन में मूव होने का मतलब क्या होता है. ये सेम मूवमेंट जब आप आपके पैरों के साथ करते थे, इट्स व्हाट यू डू व्हेन यू किक अ फुटबॉल, राइट. हिंजेस के तरह या आपके स्पेक्स के हिंजेस के तरह या आपका लैपटॉप जब आप ओपन या क्लोज करते हो, व्हाट यू डू इज बेसिकली एक सिंगल प्लेन में ऐसे मूव करते हो. अब इसको साइडवेज में दिखाती हूँ, राइट. सो ये हो गया हमारा हिंज जॉइंट जो सिर्फ एक प्लेन में मूव करता है, और ये हमारे एल्बोज क्या होता है. दूसरा एक और जॉइंट होता है जो हमारे एल्बोज के यहाँ पे होता है. सो आई विल शो यू दैट एंड दैट इज योर पिवोट जॉइंट, राइट. पिवोट जॉइंट आपके हैंड में समझने से सिंपलर एक और मूवमेंट है जो आप जब हेड साइडवेज मूव करते हो, सो एक एक्सिस के अराउंड वो रोटेट कर रहा है. वैसे यहाँ हाथ में भी एक एक्सिस के अराउंड वो रोटेट कर रहा है. मैं खुद को थोड़ा सा मूव करती हूँ और आप देखोगे कि ये जो मूवमेंट है, अभी चैतन्य पॉइंट करेगा, ये आपके एल्बो से ओरिजिनेट हो रही है, राइट. बट इसमें एक सिंगल मूवमेंट ही, जैसे हमने हिंज जॉइंट का भी देखा. नेक्स्ट व्हाट वी वुड सी, before that I think it would be better if I show you a model that we have made for explaining pivot joint. तो ये एक सिंगल एक्सिस है, इसको देखो, और उसके अराउंड ये रोटेट कर रहा है, राइट. इस तरीके से वैसे ही आपका एल्बो रोटेट करता है या आपकी नेक साइडवेज मूव करती है. The next joint that we have is what is present in your thumb. Actually thumb के बेस के यहाँ पे तो आप मूवमेंट काउंट करते हैं. ये एक हो गई मूवमेंट, ये दूसरी मूवमेंट हो गई, और अभी तीसरी रोटेटरी मोशन. तो हम सिंगल जॉइंट से 3 डिफरेंट टाइप की मूवमेंट्स यहाँ पे कर पाए, और ये जॉइंट वहां पे प्रेजेंट होता है थंब के बेस के यहाँ पे, राइट. सो व्हाट यू कुड सी हियर इज, आपको मोटा मोटा ये समझ में आ गया होगा हमने जो डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट देखे थे,
और एक लास्ट वाला जो जिसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन से अच्छा मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है, ये होता है प्लेनार जॉइंट। इसको हम स्लाइडिंग जॉइंट या ग्लाइडिंग जॉइंट भी कहते हैं। और इसे क्यों कहते हैं ये हम अभी देखते हैं। तो ये इन 8 बोन्स में होता है जिनको हम कार्पल कहते हैं, और इसी पोजीशन ये हमारे फीट में होता है जिसे हम टार्सल्स कहते हैं। नाम याद रखना नहीं है, बट आप एक बात तो देख सकते हो कि ये मोटे मोटे क्यूबॉइड जैसे है, राइट। सिंस ये क्यूबॉइड जैसे, आप देख सकते हो कि दो बोन्स किसी भी एक के साथ यहाँ पे प्लेन शेयर कर रहे हैं, और उसके अंदर उसके अलोंग ग्लाइड या स्लाइड होते हैं। तो ये कितने डिफरेंट टाइप के मूवमेंट कर सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हो। ये दूसरा ग्रीन कलर का है और इसके बीच में भी ग्रीन कलर का बैंड है, बट हमको सिर्फ मूवमेंट्स देखनी है। तो फर्स्ट मूवमेंट हो गई साइडवेज, सेकेंड मूवमेंट हो गई अप एंड डाउन, एंड थर्ड मूवमेंट इज रोटेशन। सो सिंगल प्लेनार जॉइंट 3 डिफरेंट टाइप की मूवमेंट्स कर सकता है। अब हमने देखी इन डिफरेंट जॉइंट्स में आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा ये प्लेनार जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और सैडल जॉइंट, जिसका हमने एक और मॉडल बना के रखा हुआ है यहाँ पे, जो आप यूनिवर्सल जॉइंट करके मशीन्स में आपको पता होगा। यहाँ पे ऐसी 2 कैविटीज है, आप देख पा रहे हो यहाँ एक ऐसे कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स सर्फेसेस है दोनों को, और उसके अंदर वो नाइसली फिट होता है। तो आप इसमें जैसे आपने थंब की 3 डिफरेंट मूवमेंट देखी थी, वो कैसी है, इसके कैविटी में फर्स्ट मूवमेंट, ये दूसरी मूवमेंट और थोड़ा बहुत रोटेशन, राइट। सो हमने ये देखे हुए इन 3 जॉइंट्स में मल्टीपल मूवमेंट थी, और ये 3D स्पेस में अलग अलग जगह मूव कर रहा था। और इसके कंपैरिजन में हमारा हिंज जॉइंट सिर्फ एक प्लेन में मूव कर रहा था, और पिवोट जॉइंट सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा था। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपको ये प्लेन और एक्सिस का मतलब नहीं समझ में आता, तो हम एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। ये बॉक्स है, आई वाजंट वेरी स्मार्ट टू राइट ऑन इट विद ग्रीन, बट आई थिंक इट मेक्स इट लुक वेरी फंकी। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम सिंपली समझ में आ जाता है, जिसके अंदर x, y और z एक्सिस होता है, तो ये एक 3D स्ट्रक्चर है। ये बॉक्स एक 3D ऑब्जेक्ट है, राइट। और इसके अंदर ये रेक्टेंगल्स है जो 2D सर्फेसेस है। जब x और y एक प्लेन शेयर करते हैं तो xy प्लेन बन जाता है। कोई भी मूवमेंट जो इस रेक्टेंगल या इसके अलोंग पैरेलल जाएगी, उसे हम इस प्लेन में मूव होते हुए बोल सकते हो। तो ये बोल सकते हैं हम सिंगल प्लेन। पर अगर ये इस प्लेन में भी मूव हो रही है और दूसरे रेक्टेंगल में भी मूव हो रही है, तो हम उसको मल्टी एक्सियल बोलते हैं। जिसका एग्जाम्पल अगर आप हिंज देखोगे, तो वो क्या कर रहा है, अगर हम इसको इस प्लेन से पैरेलल रखेंगे, तो ये सिर्फ किसी एक प्लेन में मूव करेगा, राइट। मैं साथ में दिखाती हूँ, ये प्लेन है, इसके पैरेलल है, और ये इस तरीके से मूव कर रहा है। बट उसके कंपैरिजन में एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलग अलग एक्सिस और प्लेन को टच कर रहा है, राइट। ये 3D स्पेस में मूव कर रहा है। तो टू मेक इट मोर कन्विंसिंग, आई हैव अ बेटर डेमोन्स्ट्रेशन फॉर दिस, सो आई जस्ट डू दैट फॉर यू हियर। ओके, तो ये हो गया हमारा हिंज जॉइंट अगेन, जो हमने देखा था, जिसको हमने कहा था कि एक यूनिप्लेनर यानी सिंगल प्लेन में मूव करता है। सो फॉर दैट मैंने फिर से चैतन्य को गिनी पिग बनाया था, और उससे कहा था कि टू टर्न ऑन अ टॉर्च एंड टू प्रोजेक्ट इट ऑन हिज हैंड। तो आप देख सकते हो उसका हाथ यहाँ पे पूरा लिट हो चुका है, और उसको मैंने हिंज जॉइंट की मूवमेंट करने लगाई थी। और जिनको पता है, आई आस्क्ड हिम टू डू अ लॉन्ग एक्सपोजर शॉट, और मैंने उसका जब लॉन्ग एक्सपोजर शॉट लिया, व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन। एक हिंज जॉइंट जो सिंगल प्लेन में मूव कर रहा है, इसका लॉन्ग एक्सपोजर शॉट लुक्स समथिंग लाइक दिस, राइट। सो व्हाट यू गॉट इज एक्चुअली अ 2D ऑब्जेक्ट विच इज अ सेमी सर्कल ओवर हियर, राइट। एक प्लेन में मूव होने की वजह से आपको एक 2D ऑब्जेक्ट मिला है जो है सेमी सर्कल। इसके कॉन्ट्रास्ट जब मैंने उसको सेम चीज रोटेशन में करने लगाई बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के साथ, ये वाला जो हम मॉडल बात कर रहे थे, एंड व्हाट वी गॉट इज एक्चुअली अ 3D कोन। सो इफ यू हैव टू पुट दोस 2 इमेजेस साइड बाय साइड, दोनों का लॉन्ग एक्सपोजर शॉट, आप देख सकते हो जो हमारा सिंगल प्लेन वाला जॉइंट है हिंज जॉइंट, उसने एक सेमी सर्कल बनाया, और एक 3D में मूव करने वाला जॉइंट विच इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इट मेड अ नाइस 3D कोन ओवर हियर, राइट। सो what I was trying to say is, because वो 3D में ये कर पा रहा था, because it could move in 3 different axes, वो ज़्यादा स्पेस में मूव कर पा रहा था। अब इमेजिन करो आपने अगर 10 ऐसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एक दूसरे को ज्वाइन किए तो क्या होगा। आई एम श्योर आपने ये एग्जाम्पल बहुत बार इससे पहले देखा होगा। सो वॉट यू हैव ओवर हियर इज अ गोरिल्ला पॉड, राइट। गोरिल्ला पॉड फोटोग्राफी में यूज होता है, इसके आगे हम कैमरा या फोन लगाते हैं, एंड व्हाट इट गिव्स अस इज एक्चुअली, इसको हम किसी भी तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को जोड़ पाते हैं और इस तरीके से कर्व मूवमेंट कर पाते हो।
सो व्हाट यू आर डूइंग ओवर हियर, जैसे आपने कोन वाला एग्जांपल देखा था, ये हो गया हमारा सबसे पहला बॉल, उसके बाद ये उसका सॉकेट. सो दिस बॉल मूव्स नाइसली इन दिस सॉकेट, और ये सॉकेट अभी नेक्स्ट इसका बॉल हो जाता है, राइट. सो आपको एक सीरीज ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मिलता है, एंड व्हाट दैट इनेबल्स यू टू डू इज बेसिकली आप किसी भी तरीके के सरफेस को ये गोरिल्ला पॉड आराम से ज्वाइन कर पाते हो, क्योंकि ये मल्टीपल कोन्स में उसको फ्रीडम देता है कि वो अटैच हो सके, राइट. नाउ हमने देख लिया यूनिप्लेनार जॉइंट, हमने देखा मल्टी एक्सियल जॉइंट जो बॉल एंड सॉकेट था, लेकिन हमने एक और बात की थी पिवोट जॉइंट के बारे में, जो सिर्फ एक एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है. नाउ हाउ टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, जैसे हमने बाकियों को विजुअली जस्टिफाई किया था, इज टू एक्चुअली थिंक ऑफ इट एज अ पेंडुलम, राइट. पेंडुलम भी क्या करता है, पिवोट जॉइंट का सिंपल मीनिंग ऐसा होता है कि किसी एक पॉइंट को स्टिक करके उसके अलोंग रोटेट करना, जो हो गया हमारा सिंपल पेंडुलम का मूवमेंट. नाउ जैसे हमने मल्टीपल बॉल एंड सॉकेट देखे थे, वैसे अगर हम मल्टीपल पिवोट लगाएंगे, जैसे यहाँ मैंने बनाया, राइट, एक पिवोट को दूसरा, और इसको स्टिक करते हुए ये रोटेट कर रहा है, जिसको स्टिक करते हुए आगे का रोटेट कर रहा है. सो व्हाट आई फॉर्म्ड इज अ चेन ऑफ पिवोट जॉइंट. तो आप सोचोगे जब हमने मल्टीपल बॉल एंड सॉकेट बनाया था तो उससे तो इतना ज्यादा 3D स्पेस एक्सप्लोर कर पा रहे थे. सो व्हाट वुड यू गेट इफ यू जॉइन मल्टीपल सच पिवोट जॉइंट? What you get is actually way familiar that you would not realize. It's actually an example of chaotic pendulum. जिनको chaotic pendulum पता है, please write in the chat. And here you could see मैंने एक pivot को basically दूसरा एक और pivot join कर दिया है, और उसके आगे end पे एक एक LED लगा है. So what do you think would happen if I take a long exposure shot of this? So those who know chaotic pendulum, the result is chaotic and yet beautiful, and you get something like that. So आपका ये जो सिंगल पिवोट है वो ऐसा सर्कल बनाता है, वो सर्कल में एक्सप्लोर कर सकता है उस प्लेन को, पर जो सेकंड पिवोट है जो उसको एडजेसेंट ज्वाइन किया हुआ है, इट गोज ऑल ओवर हेवायर, राइट. अब इमेजिन करो अगर आपने अभी सिंगल टाइप के जॉइंट देखे, आपने मल्टीपल सिंगल टाइप के जॉइंट देखे, बट अगर आप दो डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, इट्स अ टंग ट्विस्टर, तो क्या होगा? एंड यू डोंट हैव टू थिंक फार, क्योंकि आपकी बॉडी एग्जैक्टली यही चीज करती है. इफ यू थिंक अबाउट इट, यहाँ मैंने क्या बताया कि अगर आप बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को एक हिंज जॉइंट से ज्वाइन करेंगे, व्हिच इज लाइक आपके बॉल एंड सॉकेट को एक हिंज जॉइंट से ज्वाइन करोगे, तो क्या होगा? सिंपल बात है, हिंज जॉइंट सिर्फ एक ही प्लेन एक्सप्लोर कर सकता है, बट अगर हम इस हिंज जॉइंट को, मैं यहाँ दिखाती हूँ, अगर हम इस हिंज जॉइंट को, मैं थोड़ा फुल इसमें दिखाती हूँ फॉर अदर्स, हाँ, अब यहाँ पे ये हो गया हिंज जॉइंट, बट अगर मैं इसी को, सॉरी मेरा बॉल एंड सॉकेट अटक गया था, हाँ, इसी हिंज को यहाँ पे बॉल बना दिया, राइट, और उसे एक सॉकेट लगा दिया, तो अब मैं यही एक्शन ऑफ मूविंग इन अ सिंगल प्लेन अलग अलग प्लेन्स में एक्सप्लोर कर सकती हूँ, बिकॉज ऑफ इट्स junction with the ball and socket joint. So what I'm trying to get at is, आप अलग अलग टाइप के joints को join करके 3D space को different टाइप से explore कर सकते हो. And जैसे मैंने अभी आपको ये joints का example यहाँ पे दिखाया था, so think about it. अभी मैंने ये जो hand model आपके सामने रखा था, इसके अंदर क्या क्या है? हमारा जो ball and socket है, ये एक multi axial joint है. हमारा जो हिंज जॉइंट है, ये एक यूनिप्लेनार जॉइंट है, जिसको जुड़ा हुआ हमारा पिवोट जॉइंट भी था, जो एक यूनी एक्सियल जॉइंट है, और उसके आगे आता है हमारा सैडल जॉइंट, जो है मल्टी एक्सियल. नाम नहीं ध्यान देना, बट हमें देखना है कि इनमें कितनी डिफरेंट टाइप की मूवमेंट है, मल्टी एक्सियल, यूनिप्लेनार, यूनी एक्सियल और मल्टी एक्सियल. अब इसका मतलब क्या होता है? आप जितने डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स ज्वाइन करोगे, आप उतनी वैरायटी ऑफ मूवमेंट तैयार कर पाओगे. और इसके लिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर इंडियंस द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज जेसीबी की खुदाई, राइट? #JCB की खुदाई इन द चैट. एंड kidding apart, even though JCB has all these multiple different types of joints, a better example of this would be something you see in robotics, right? आपने बहुत बार सोशल मीडिया पे ये क्लिप्स देखी होंगी जिसके अंदर असेंबली लाइन के रोबोट्स होते हैं, राइट? सो व्हाट यू डू हियर इज, इन्हीं डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स को ज्वाइन करके आप अलग अलग मूवमेंट्स कर पाते हो. एंड दिस इज एंटायर ब्रांच इन बायोलॉजी विच एक्सप्लोर्स दिस. मतलब क्या कि बायोलॉजी के या नेचर के कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज को उठा के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना और उनकी एप्लीकेशन हमारे यूज के लिए लाना,
ये बायोमिमिक्री के अंदर आता है. इफ यू वांट यू कैन लुक इट अप. अगर आपको आज के सेशन के थ्रू कोई भी डाउट्स होंगे, प्लीज राइट इट टू अस, and we would be more than happy to answer it for you. If you like this style of doing a demonstration, please write to us, give us a feedback. See, in COVID time, we are at the mercy of technology, so we try to do something new. हमें थोड़ा simulations, थोड़े demonstrations के through, थोड़ा hands-on activities के through, we tried to make a mix of this demonstration. Hope you liked it. Please let us know. Your feedback is really valuable. With that, I would hand over the session to Ashok sir, and thank you for listening to me. Hello, Shraddha. Thank you very much, Shraddha and the Chaitanya, for such a wonderful demonstration and the simulation. And let me remind you, every session, there is another interesting session after this first one. And what is that? The question answer session with the ISER faculty. Today we have with us Dr. Sudha Rajamani. She is a faculty of the biology in the ISER Pune. So we are connecting to Sudha for question answer session. But before that, I would like to remind you, in the description box there is a link. So if you have any question in your mind on the physics, chemistry, biology, mathematics, please send your question by using that link. देखिए, हम हमेशा कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं. आज हमारा कुछ अलग एक्सपेरिमेंट था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिमुलेशंस, विजुअल्स आपको कैसे दिखाएंगे. तो बिल्कुल एज श्रद्धा मेंशन यू, इफ यू हैव द फीडबैक ऑन दिस सेशन, प्लीज सेंड योर फीडबैक यूजिंग द चैट. Now, I would request to Chaitanya, please introduce our today's faculty, Dr. Sudha Rajamani, and please start. So I think Dr. Sudha just got locked out. Just give us a few seconds till which she gets back. Her Zoom just got disconnected. Yeah, and she's back. Sorry. Good, no issues. Okay, so hi, hello everyone. So it's my pleasure to introduce Dr. Sudha to you. Dr. Sudha basically is an associate professor in biology in ISER Pune, and she works in the field of astrobiology and chemical origins of life. So basically she looks at how life evolved on our planet and how life probably started in the universe from chemistry to biology. She also runs a cool lab in ISER Pune. It's called Cool Lab because the full form is Chemical Origins of Life. And she also is my PhD guide. So I'm very thankful for her for all her guidance. So she runs a cool lab and she's a cool boss. So I would just say, Sudha, if you want to tell our viewers a little bit about what astrobiology is and how the astrobiology actually works, or what do you do in astrobiology? Sure. I'm going to start sharing a screen, which will help me do this. Good morning, everyone. Just give me a second while I open this up. Sorry, give me a sec. Where is it? Yeah, that's right. Yeah. Chaitanya, can you confirm if you can see the presentation? Right now I can see your slides. If you go into the presentation. You can, right? Okay. Yes, now I can see the slideshow. Okay. I hope I'm in the right presentation. Hello, everyone. My name is Sudha Rajamani, and as Chaitanya mentioned, I'm an astrobiologist, and we have a lab called the Chemical Origins of Life Lab in ISER Pune, where we try and understand how life might have emerged on the early Earth. And what do I mean by that? I'm going to use a few slides to explain that to you very quickly. I'm not sure how many of you might have heard about this in your classes, but the truth is that there is this huge continuum that exists from physics to chemistry to biology. What do I mean by that? Physics deals with atomic level entities. Here you see the hydrogen atom, the helium atom, and the carbon atom. Several of these atoms come together to form simple molecules, simple to complex molecules, as is shown in this chemical, in this panel here, which says chemistry. And some of the times the molecules can be extremely complex, like 60 carbon atoms coming together to form these buckyballs that have been found even in the space. And many of these molecules actually are synthesized regularly in the interstellar medium in the outer space. And now the continuum from chemistry to biology, essentially these smaller molecules come together to form larger biomolecules. And on the left, you see the smaller versions of the biomolecules.
which include amino acids like glycine, alanine, glutamic acid, and serine. And many of these come together to form much larger molecules like the proteins that are shown here. This is a very famous protein called cytochrome, which can be traced back to the oldest forms of life. And on the right side here, you have an RNA enzyme called the ribozyme. So if you start zooming into your cells and into these biomolecules, you can actually go from biology to chemistry to physics. So you see how there is this continuum. Given this, and the fact that we can actually figure out how some of these molecules might have been present on the early Earth about 4 billion years ago, we can ask the question, how did the transition from chemistry to biology happen on early Earth? And how do we think about how these molecules might have been present on the early Earth? There might have been two routes for this. One is exogenous delivery. What do we mean by that? We mean that the molecules would have ridden on meteorites and comets that bombard the planet to this day, and they can carry many of these biomolecules in their core, and they can kind of, once they strike the Earth, the outer core gets dissolved and they can now be found on Earth, in the terrestrial environs. And on the right-hand side, the panel shows you a volcanic geothermal pool which exists at the edge of a volcano, where there are very interesting temperature and chemical fluxes. And these sites are touted as one of the important sites for the origins of life, where these interesting chemical molecules can be readily synthesized. And the bottom panel just shows a whole bunch of these molecules. Given this, and the fact that the least common multiple amongst all these species that you see on this slide, including Nelson Mandela, T-Rex, and these giant redwoods, which is the cells, given that they are super ancient and they're present even in bacteria, which are supposedly 3.9 to 4 billion years old, we can agree that it's the fundamental unit of all life. On this panel, on this slide, you see two cells which are very, very complex. It is not thought that the original cells which first came about on the early Earth could have been this complex. But amazing thing is, even single cell organisms are super complex. They can exist in the extremes of environment, allowing us to understand the limits of life, even by studying them on present environs on Earth. They are UV resistant, heat loving, salt loving, cold loving, so on and so forth. But finally, what we do in the lab is to try and understand how the most simplest form of cells, or the protocells, came about, where you literally have a genetic material encapsulated in a membrane. And this field allows us, this field of astrobiology allows us to draw up a story of the emergence of life, which is actually consistent with all the evidence, scientific evidence that we gather from various areas of sciences, including chemistry, geology, planetary sciences, physics, and biology. And hence, this particular area of science is extremely interdisciplinary, as this particular image shows. And we in the lab use several tools from biochemistry, molecular biology, biophysics to understand how you go from chemistry to life. Okay, so the chat often says that थोड़ा सा हिंदी में बात कीजिए. So हम थोड़ा सा हिंदी में लोगों को ये बता देते हैं कि ये क्या था. So basically एस्ट्रोबायोलॉजी ये जो सब्जेक्ट है, एस्ट्रोबायोलॉजी ये सब्जेक्ट में आप फिजिक्स से लेके, केमिस्ट्री से लेके, बायोलॉजी से लेके जो अलग अलग आइडियाज आते हैं, उनको आप कंबाइन करते हो और आप ये देखने की कोशिश करते हो कि बायोलॉजी में जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ से बनते हैं. एंड ऑल ऑफ दीज आर केमिकल मॉलिक्यूल्स. So वो केमिकल मॉलिक्यूल्स कैसे बने होंगे, वो अर्थ पे कहाँ से आए होंगे, और ये केमिकल मॉलिक्यूल्स एक साथ आके एक सेल या फिर एक पेशी कैसे बनाते हैं, और ये जो पेशी बन रही है या फिर ये जो सेल बन रहा है, वो सेल्स आगे जाके एक लाइफ फॉर्म की तरह कैसे इवॉल्व होता है. सो ये छोटा सा इमेज जो आपको शायद स्क्रीन पे दिखता रहेगा कि आप केमिकल मॉलिक्यूल से चालू करते हो, फिर आप किसी एक इनिशियल या फिर एक छोटे प्रोटोसेल जैसे पुराने सेल जैसे फॉर्म में जाते हो, फिर वहां से आप एक नए सेल या फिर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म तक जा सकते हैं. सो just to add to what Chaitanya says, astrobiology को हिंदी में खगोल विज्ञान बोलते हैं. And आप गूगल कर सकते हो और इसमें आपको कितना सारा हिंदी का रिजल्ट आपको मिलेगा, हिंदी बेस्ड रिजल्ट मिलेगा मुझे पता नहीं, but it is very readily available, and you please go to Google and try and understand what astrobiology is. Okay. So Sudha, usually we'll now go to the students' questions. So students often ask questions and all over the place. So the first few questions are about viruses. So I'll ask you the first question, which is there. So the first question is actually from Lasya, who is in 9th standard. And the question is, I have often heard that a virus is it says that I've often heard that a virus only lives when it enters into another living organism's body. How does it happen? How could a non-living thing be alive when it enters another body? Okay, so हिंदी में अगर थोड़ा सा ये समझना है
कि ऐसा कहा जाता है कि एक वायरस जो है वो एक नॉन लिविंग चीज है, और जब वो किसी के बॉडी में जाती है तो वो उसको लिविंग हो जाती है और इन्फेक्ट करती है. सो ही इज बेसिकली आस्किंग कि एक नॉन लिविंग चीज किसी के बॉडी में जाके लिविंग कैसे हो जाती है. तो मुझे पहले थोड़ी डेफिनेशंस क्लैरिफाई करनी पड़ेंगी. When we talk about life, we work within a working definition that got ratified or that got approved by NASA Astrobiology Institute by a whole bunch of experts who think about this question day in and day out. Basically, it is a network of chemical entities that can grow, replicate, and evolve. So if any entity on the planet can fit this definition, then you can very comfortably call it life. And virus का ये problem है कि वो ये डेफिनेशन को पूरा सेटिस्फाई नहीं करता. वायरस को हम ऐसे ही अगर बाहर कहीं अपने आप में रहेगा, वो अपने आप से ग्रो नहीं कर सकता है, अपने आप से रेप्लिकेट या मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है. वो ये दोनों इंपॉर्टेंट हॉलमार्क्स ऑफ लाइफ तभी कर सकता है जब वो कोई और लिविंग एंटिटी को इन्फेक्ट करे. बैक्टीरियोफाज करके एक वायरस है जो जहां तक हमें पता है वो सबसे डेंजरस लिविंग बीइंग ऑन द अर्थ है. Basically, what does a bacteriophage do? A bacteriophage infects a bacteria and wipes it out. When it does that, let me see if I can show you something. Let's look at this image once. And I know it's a little, there are too many panels on it, but I will ask you to concentrate on this A1, A2, A3 panels. जब भी कोई वायरस किसी होस्ट के सेल से उसका एक कांटेक्ट होता है, the host cell takes it inside, just like the host cell takes in a lot of different molecules. And ये जो इंटरैक्शन है वायरस के बीच में और बैक्टीरिया के बीच में, ये बहुत ही स्पेसिफिक है. एक वायरस जो एक काइंड ऑफ बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, ये गारंटी नहीं है कि वो दूसरा काइंड ऑफ बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकता है. ये जो इंटरैक्शन वायरस और बैक्टीरियल सेल या वायरस और ह्यूमन सेल के साथ है, एक्सट्रीमली स्पेसिफिक है. दैट इज फैसिलिटेटेड, या वो ये जो इंटरेक्शन होता है ये इन दोनों के बीच आउटर लेयर में जो प्रोटीन्स होते हैं उनके वजह से होती है. जब ये पहले जाके बाइंड करता है ये स्पेसिफिक इंटरेक्शन से, जो लॉक एंड की जैसा होता है, तो ये जो होस्ट सेल है वो उसको एनगल्फ कर लेता है. और एनगल्फ करने के बाद एक स्टेज होती है जहां पे छोटा सा एक अपर्चर या एक ओपनिंग होता है जहां से वायरस अपने अंदर में जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसको पुश आउट कर सके. एंड एक बार वो जेनेटिक मटेरियल और अंदर के जो थोड़े बहुत और प्रोटीन्स है पुश आउट कर सके, तो वायरस बेसिकली ये बैक्टीरियल सेल को हाईजैक कर लेता है. उसके पास रेप्लिकेट करने की मशीनरी नहीं है, लेकिन जो होस्ट सेल की मशीनरी है उसको अपनी मशीनरी के माफिक यूज करके बेसिकली इट cheats the host cell into producing more copies of itself. एंड एक बार बहुत सारे वायरसेस जब बन जाते हैं बैक्टीरिया में, अंदर और एक प्रोटीन भी बनाता है जिसमें से वो छेद करता है ये बैक्टीरिया के सेल वॉल में, और बहुत ही लोड जब ज्यादा होता है ऐसा बर्स्ट होके नए वायरस पार्टिकल्स thousands of them come out. So this whole question of it is not alive outside, but when it is in a living being it is alive, it's a very 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 tricky statement. It is not completely alive. Actually आप देखोगे तो फील्ड में बहुत सारा डिबेट है इसके बारे में, अलाइव है नहीं है. थोड़े लोग माइनॉरिटी हैं जो बोलते हैं कि एक फोर्थ फाइलम होना चाहिए जो वायरस के लिए है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा डिबेट है जिसके बारे में आज मैं बात नहीं करूंगी. लेकिन सफिस टू से, वायरस अपने आप में जब होता है कुछ नहीं कर सकता है. It is more like a parasite. It requires the host cell, be it a bacterium, be it human, it requires a host cell to multiply. वो host cell का machinery अगर नहीं है तो वायरस कुछ नहीं कर सकता है. I hope that has answered the question to some extent. Okay, so we'll just go to the next question. The next question is also about viruses. It says that why do viruses keep on doing mutations, and can you explain that? So basically the question is from Apurva who is in 9th standard, and the question basically asks that viruses apparently keep mutating a lot. So can you please tell us why that is the case? Sorry, just to quickly tell you people, I'm sorry, the A panel was for Mimiviridae, then you have Pandovirus, then you have Pitovirus, and then you have the last one, Mollivirus. And these are a class of viruses called giant viruses, which are much larger than the regular viruses. Yeah. So to answer this question regarding mutations and why do viruses mutate a lot, I think we first need to understand what is a mutation.
Mutation is fundamentally change in the genetic matter. That is all there is, yeah? There is a change in the sequence of the genetic material, whether it's a DNA or an RNA, which leads to a lot of interesting outcomes. And more importantly, all of this variety that you see on the planet today has fundamentally arisen because of mutations, because of changes to the genetic material. Here I'm showing an image where you can see multiple things, right? I will bring your attention to this double-muscled cattle. This is a cow. A regular cow doesn't look like this. This looks like it goes to the gym every day and it does pumping, right? It does exercises. Fundamentally, it is a genetic mutation in this cow that allows it to make more fat. And we humans, in our greediness of wanting more meat and more meat, we have managed to understand how to do these genetic variations. But a more natural kind of a mutation, which very regularly occurs, what I mean to say very regularly, which naturally occurs in the DNA, leads to something called red hair. Do you see this here? Let's just look at it slightly a little more in detail. It's present in only 1 to 2% of people around the world. And these 1 to 2% of the people may say predominant number of लोग स्कॉटलैंड में या आयरलैंड में रहते हैं, यूके में, या एंड उनके उनकी अगर चर्बी देखी तो बहुत ही लाइट होता है और उनके आई कलर भी बहुत ही लाइट होता है, एंड दे आल्सो हैव दीस लॉट्स ऑफ डॉट थिंग्स ऑन देयर फेस कॉल्ड फ्रेकल्स. नाउ व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज ये जो म्यूटेशन जो है किधर होता है? एक MC1R जीन है. जीन इज अ section of DNA that can make a protein, that codes for a protein. ये MC1R जीन करके एक जीन है जो जब उसके इंफॉर्मेशन को यूज करके हम एक प्रोटीन बनाए, MC1R प्रोटीन बनता है जो पिगमेंट सेल्स के सरफेस में जाके सिग्नल्स को थोड़े सिग्नल्स, हार्मोनल सिग्नल्स को रेस्पॉन्ड करता है. ये MC1R जीन कहाँ है? पिगमेंट सेल्स में है. पिगमेंट्स क्या है? They are those entities that give your skin and hair the color that they have, right? So what happens in red-haired people is there are much fewer MC1R proteins that are made in their cells. So many of them don't even go to the surface of the cell. And so even if your signal is present, the cell doesn't realize that it has to make black pigments. So the automatic status, it will only make red pigments. And hence you see that the hair ends up becoming red and not black. अभी एक और इंटरेस्टिंग चीज है, ऑल इज नॉट ग्रेट इन दिस सिचुएशन. अनफॉर्चुनेटली ये रेड हेड्स जो होते हैं, रेड हेड पीपल जो होते हैं, दे आर ऑल्सो प्रोन टू कैंसर अ लॉट, क्योंकि जो डार्कर पिगमेंट है दैट हेल्प्स अस दैट हेल्प्स टू protect from sun's harmful UV radiations much better than light skin. Yeah, I'm going to use this graph to show you that in this particular image you have mutation rate of the particular organism on the y-axis. You have the genome size or the size of the genetic material in the nucleus of this organism on the x-axis. What it shows is, पता नहीं चैतन्य आपको ये दिख रहा है यहाँ पे एक छोटा सा एक squiggle, that is a viroid. Yeah, अगर आप देखोगे इसका म्यूटेशन रेट इतना ज्यादा है कि वो एक्चुअली उसका जीनोम साइज बहुत कम है. तो ये अभी लेट मी टेक दिस एग्जांपल. यहाँ पे जो है ये वायरसेस हैं, ये जो म्यूजिकल नोट जैसे दिख रहा है और फिर एक स्ट्रिंग जैसा दिख रहा है, दिस इज द नोटोरियस एबोला वायरस. एंड यहाँ पे इट इज दिस आइकोसाहेड्रन शेप इज सपोज्ड टू रिप्रेजेंट अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस. अगर आप देखेंगे इसका म्यूटेशन रेट 4 पर साइट पर रेप्लिकेशन है, 4 पर बेस पर रेप्लिकेशन साइकिल में it can be mutated those many times. So if your genome is small, जल्दी हम जीनोम को म्यूटेट करके जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस हैं उनमें से हम अगर थोड़ा स्ट्रेसफुल एनवायरमेंटल चेंज आ जाता है तो क्विकली अडेप्ट कर सकते हैं. So that is the reason viruses have a very high mutation rate. And also to remember, viruses are constantly in a sort of war with their hosts, right? The host is constantly developing defense systems to take care of the virus. And the virus has to constantly keep evading that defense system. In order to be able to evade the defense system and still continue to be virulent or infective, it has to keep mutating a lot. And as you can see, eukaryotes, which is us, and here is an example of a eukaryote rodent with whom we share a very high genetic similarity. We have very small mutation rates in our genome. And ये argument put forth किया गया है कि as organisms became more complex, viruses are in the nanometer scale, we are in the meter scale.
As organisms became more complex, the mutation load became lower so that more information can be contained in the genetic material. So viruses have a huge advantage to mutate faster, ताकि वो better infect करे, and they do a lot of this by making certain molecules which help them replicate fast, right? And that fast replication also can, जब हम जल्दी कुछ काम करते हैं तो error करने में ज़्यादा chances हैं. So that is also thought why viruses can mutate very quickly. Okay, nice. So hope that answers your question, Apurva, a little bit. The next question is from Ved Vaidya, who is in 7th standard. And the question is, it is said that tardigrades can survive most extreme environments. How do they do that? And for this, I have to thank a resource that Chaitanya pointed me to. It's a wonderful TED video. Chaitanya, I hope we can share a lot of these resources with the students going forward, right? Yes, we'll put all this in comments. So for the viewers, we'll put most of these links or the resources in the comments or in the description of the video, so you can check that later. Awesome. So basically this organism that you see on the screen now, it's called a water bear. Why? Look at it. It looks like a bear, right? Look at its face. Actually, if you ask me, it looks like a slightly scary gummy bear. Yeah. And these tardigrades are organisms that can withstand a lot of extreme conditions, not just extreme heat and extreme cold. They can even survive extreme radiations, and get this, they can survive in the vacuum of the space. मुझे पता नहीं कितने लोगों को ये पता है. There was a launch of a shuttle, I think space shuttle by Israel, which didn't go very well, around the same time as when we were trying to work with the Vikram lander. And what ended up happening is they had a tardigrade experiment in the shuttle. So it turns out the shuttle mission didn't happen, and there is a good reason to believe that we might have polluted that particular planetary object with tardigrades, which actually originated and evolved on Earth. So tardigrades, how do they survive some of these extreme conditions that I'm talking about, right? Very interesting. When water becomes really low, they undergo a process called anhydrobiosis. Literally means living without water. How do they manage to do that? What they end up doing is their cell starts producing the sugar called trehalose. Trehalose is a lot like your glucose, but it looks a little different. The trehalose that is produced makes this matrix inside the cells, which now locks all of the cell's biomolecules in place. So the biomolecules can now not break up or disintegrate or open up and anything of that sort. So it's almost like freezing it in time, but in a sugary matrix. And what they end up doing is the head and the legs kind of fold up into a ball. And this ball is called a tun state. And they can survive for hundreds of years in this tun state. Yeah, several tens of years in this tun state. The second, there is water again. That matrix, which is a sugary matrix. अभी आप sugar लेके पानी में डालो और घोलो, sugar घुल जाती है ना? So as soon as there is water in the environment, it goes and it dissolves the matrix, and the cells become old. They go back to their old and happy state, and the tardigrades open up and start going through their life cycle again. The cool thing is we do not completely understand how this works. When I say cool, what I mean to say is there's a lot of research that still needs to be done to understand why tardigrades can do what they do, which makes them survive extreme conditions, because it has important implications, for example, to make crops that are extremely heat and cold resistant, right? You have all this climate change happening all over. So it's important to try and understand these processes to make better crops, resistant crops. Maybe at some point, understanding how tardigrades use their biochemistry to survive at the edge of life or survive the extremities of life will eventually one day help us understand processes that will be very useful to send astronauts to space, where they can survive for much longer. So people out there, all you have to do is, tardigrades के लिए हमें space में जाना नहीं है और कहीं extreme environment में जाना नहीं है. They survive in all the continents, by the way, right? And in various ecosystems, deserts से लेके ice तक. All you have to do is hike up to the slightly foresty patch near your home. There are lichens there. Lichens, those complex organisms, which is a symbiotic relationship between a fungi and an algae. These organisms actually host tardigrades. So if you can go, all you need is a microscope, bring back some of these lichens from the garden, and you're good to go. You can surely see tardigrades at home. Sorry. Okay, so basically,
टार्डिग्रेड्स मतलब इस पूरे डिस्कशन का पॉइंट ऐसा था कि टार्डिग्रेड्स जो होते हैं उनके अंदर एक बायोकेमिकल मैकेनिज्म होता है या फिर उनके अंदर एक शुगर होता है, जो शुगर को एक सही टाइम पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसके वजह से उनके अंदर के जो बायोमोलिक्यूल्स है जैसे डीएनए है, प्रोटीन्स है, आरएनए है, वो ब्रेक नहीं हो पाते। सो एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स मतलब क्या है कि उन्हें अगर आप वैक्यूम में डाल देते हो या फिर उन्हें अगर आप हाई टेम्परेचर में डाल देते हो तो वो टार्डिग्रेड्स के अंदर का डीएनए, आरएनए या प्रोटीन ये सब जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होता है, जिसके वजह से वो इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट में सर्वाइव कर पाते हैं। जब वो उनको पानी वापस आ जाता है, सो द शुगर डिसॉल्व्स इन वाटर एंड देयर सेल्स कैन फंक्शन बैक अगेन। Okay, that's the overall idea, right? So absolutely. Or I just want to say something here, which I wanted to say a little early on itself when we started talking about viruses. The demo that you had about your vision, right? That thing. Please understand, people, the physics in biology is fundamentally trying to understand life using physical tools. ये जो tardigrade का image आप देख रहे हो और previous images में आपने जो virus के images देखे, mimiviridae का individual steps of infecting the cell and trying to kind of push its genetic material in, making more of it. All of this is possible because of where we have come with technology with regards to microscopes. And microscopes function, light microscopes in particular, function a lot like your retina. Having said that, these very highly precise images are not taken using light microscopes. These are electron microscope images, जहां पे आपका जो photon होते हैं जो light source में, that is replaced by electrons. Electrons actually have 100,000 times much smaller wavelengths. So essentially you can now see much smaller objects even better. And I just want to leave you with this one thing where I discovered in all of my reading about this very cool project called Castle. And these people are a whole bunch of extremely bright people who know every aspect of microscopes, right from the engineering aspect to the biological aspect to the chemical aspect of biological aspect, as in how do you understand organisms and how do you work with the samples to study them, chemical aspects to study the atoms actually. And they have come up with something, they are soon coming up with, or they have come up at least at a test stage level with something called chemiscopes. And those chemiscopes are actually going to be able to allow us to look at various microorganisms almost, or even biomolecules at an atomic level. And that is completely mind-blowing. I'll share that resource with Chaitanya, and Chaitanya can put it up on the in the comment section. And what I'm trying to say is, अभी जो ये कोरोना वायरस है, जो ये पैंडेमिक कॉज किया है, सारा ये हल्ला गुल्ला जो मच रहा है कोरोना वायरस के वजह से, अगर ये कोरोना वायरस म्यूटेट होगा, और जब ये म्यूटेट होगा, एक्चुअली वो हो रहा है, and we have a few different variants on the earth, we can use even chemiscopes to look at them. So turns out you can even identify the differences in the spike proteins potentially. So I can't wait for this technology to be out there and be used regularly. Okay, that is actually very cool, right? So we'll just go to the next question. The next question again is about some microorganisms, a lot of microorganisms related question today. So the question is actually about a bacteria, and the question is from Sambhav Agrawal, who's in 4th standard. Okay. So nice. The question is, a bacteria is a cell and antibiotics kills bacteria or cells. So human body is also made of cells. So how does it affect your body? So basically he's trying to ask कि bacteria भी एक cell है और human body में भी cells होते हैं, और हम जब antibiotics लेते हैं तो वो bacteria को मार देते हैं. So if they kill the bacteria, how does it affect the human body? Antibiotics. So मुझे एक चीज के बारे में पहले बताना पड़ेगा यहाँ पे. हमारा जो शरीर है, our body is covered in microorganisms inside and outside. We are walking around with trillions of them present in our gut, on our skin, and name it, in your eyes, on my palms. You can wash your hands millions of times with the most fantastic of soaps. You're still going to have bacteria. And that is important because not all bacteria are harmful. There is the good bug and there is the bad bug. There are good bacteria and there are bad bacteria. Now, why am I saying this? A lot of your good bacteria, actually, there are 3 kinds of them. Some that are just freeloaders. By chance, they are in your body. They will just behave like good people and they will not do anything, but they will just kind of keep multiplying. And the amazing outcome of that is the bad bugs will not have enough space now to invade your body. So that is one kind. The second kind is where they actually cause trouble, and they are the bad bugs. Yeah. And the third kind, the first kind is called the indifferent bug. The second is called the bad bug. The third kind is the good bug, which basically
helps you to live life. What do I mean by that? They help you in your metabolism, and they help you in a whole lot of other things. And more recently, there has been a few very cool pieces of work, actually a good bit of work, that shows that your gut microbiome affects the way you think. The serotonin that makes your brain function the way it does, one of the important molecules that makes your brain function the way it does, is made in your stomach. Now, you have these things called antibiotics, which were discovered a while ago now, for a long time now. But prior to that, when they were not around, all of these diseases and all of these infections were attributed to something which we didn't understand, right? We didn't know anything about it. So maybe it was caused by some evil organism or an evil human, or maybe it was cursed by the cosmos or something like that. But Robert Hooke, back in 1665, actually ended up making the first kind of microscope that we know of as a microscope. And when he started observing a lot of interesting things, he came out with a book to share his excitement, to share the stuff that he was learning. And for the first time, you could see that insects have compound eyes, and plants have very regulated structures in them, which he went on to call cells. But more famously, when we think microscopes, we think of Anton von Leeuwenhoek. Do you people know that Anton von Leeuwenhoek was a fabric merchant? And he actually made the microscope to look at the various fabrics that he has. And along the way, he started looking at other things, like he spit and he looked at his saliva. He went and collected water from pond water and he looked at that. And then he did other things with certain other bodily fluids, which I'm not going to talk about. But having said that, he collated all of his scientific findings and sent it to the Royal Society in UK and published it, which completely has changed the way we understand microorganisms now. So these antibiotics actually are products that microorganisms make for different reasons. Some provide protection to themselves. Some are important for other microorganisms that live in their ecosystems to live healthily. And there are lots of these different kinds of interactions in that ecosystems, because of which microorganisms keep making molecules, and some of them are used as antibiotics by us. Now, ये जो antibiotic होता है, वो predominantly जब बनाते हैं, हम उसको ऐसे बनाते हैं, researchers उसको ऐसे बनाते हैं ताकि वो टारगेट करेगा सिर्फ बैक्टीरिया को. एंड ये टारगेट कैसा होता है, वो मैंने जो वायरस और बैक्टीरिया के बीच में लॉक इन की मैकेनिज्म टाइप बताया ना आपको, तो ये एंटीबायोटिक मॉलिक्यूल का जो शेप होता है वो बहुत स्पेसिफिकली बैक्टीरिया के सरफेस पे जो एक प्रोटीन होता है उसको जाके बाइंड करता है. अभी ये एक प्रॉब्लम है कि हमारे गट में और हमारे बॉडी में बहुत सारे जगह में अच्छे बैक्टीरिया हैं, बुरे बैक्टीरिया हैं. तो जब हमें डॉक्टर जब कंफर्मडली सॉर्ट ऑफ टेस्ट करके बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया की वजह से आपको लैरिंजाइटिस या कुछ और हुआ है करके कंफर्म करके जब हमें एंटीबायोटिक्स देते हैं और जब हम उनको लेते हैं, ये एंटीबायोटिक्स जाके गुड बग्स बैड बग्स दोनों को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के बीच में जो ये मॉलिक्यूल्स हैं जो सरफेस पे होते हैं, दे आर मच क्लोजर टू ईच अदर. लेकिन ये ह्यूमन सेल्स जो होते हैं, उनके सेल पे जो ये प्रोटीन्स होते हैं जिनको रिसेप्टर्स बोलते हैं, ये बहुत अलग होते हैं. इसके वजह से एंटीबायोटिक्स ह्यूमन सेल्स को इन्फेक्ट नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा. लेकिन बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते वक्त अच्छे बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करेगा. इसीलिए जब भी हम एंटीबायोटिक खाते हैं, डॉक्टर्स हमें कुछ और देते हैं. इट्स कॉल्ड अ प्रोबायोटिक. लिटरली इट इज अ टैबलेट which is made of spores of bacteria. It's almost like taking several dabbas of curd and having it at the same time. Yeah, it has several thousands of spores of bacteria, which then go and make the good bugs in your stomach and then repopulate them. That is the reason it's extremely important to take the probiotic with the antibiotic. Having said that, antibiotic will specifically target molecules in the bacteria which are not present on the human cell, and that is how it can prevent the human cell from getting affected. Okay, that was a very nice explanation. So basically, it says, I mean, for a layman word, अगर आप antibiotics खा रहे हो तो उसके साथ थोड़ा सा कर्ड खा लीजिए ताकि आपके good bacteria ना मरे. That's a simple take-home message. Okay, so we are almost running out of time, so we'll now shift to our last question. The last question is from Saisha Nimbarkar, who's in 8th standard. And her question is, why do we require to wear masks during this COVID-19 pandemic? A very important question, right? And I will use this image to talk about it. अभी जो ये pandemic हो रही है, it's happening because of this virus called the SARS-CoV-2 virus. ये जो left top panel में जो images हैं, it's actually these viruses coming out of a lung cell of an infected
American from whom they got the sample. And this basically sort of shows you this single-stranded RNA virus, which has this spiky crown-like structure, right? That's why it's called the crown-containing virus. Now, what happens is, जब कोई infected person होता है, ये सिर्फ SARS-CoV-2 के लिए valid नहीं है, सारे viruses, viruses that infect the respiratory tract, उनके लिए valid है. अगर आप sneeze करेंगे या cough करेंगे, and if you're infected, you're going to emit a whole bunch of these molecules, right? A whole bunch of these viruses into the atmosphere. And somebody who's close to you, and अपने घर में अभी जब हम होते हैं, कभी-कभी हम बहुत नजदीक एरिया में बैठते हैं और टीवी जब देखते हैं, बगल में बैठते हैं, and by mistake आपने अच्छू करके किया, that is now going to affect the next person who's sitting next to you, because that person is going to inhale those particles. वो अपने श्वास के द्वारा उसको अंदर ले लेंगे. अभी ये जो लोअर राइट पैनल है, यहाँ पे बंदा, मुझे लग रहा है ये बंदा है, बंदी भी हो सकती है, but this person is not sneezing, is not coughing. The person is talking. A very recent piece of work in PNAS, Proceedings of National Academy of Sciences, actually shows that even loud talking can emit these droplets which contain the virus. The droplets are in the range of 1 micron to 500 micron. 1 micron bole to apna bacteria ka size, 500 micron much larger, yeah? And the research basically worked with the lower sized droplets which remain in the atmosphere for longer period, kyunki wo bade nahi hai aur niche nahi chale jayenge. They've shown that these, even talking can generate this. So हम जब रोजमर्रे की जिंदगी में बात कर रहे हैं, दूसरे लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, अभी तो लॉकडाउन खत्म हो गया, सभी अपने काम करना, सभी लोग ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग दूसरे तरह के काम कर रहे हैं, आप लोगों का स्कूल जनवरी में शुरू हो जाएगा, लेकिन तब तक अगर you will not have the vaccine, and it's very difficult, अगर वैक्सीन भी आ गया तो India has a population of over 1 billion, सबको वैक्सीनेट करने के लिए टाइम लगेगा. तब तक जब तक ये सब सेट ना हो जाए, हमें मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि ये जो ड्रॉपलेट्स जब हम बात करते वक्त, अभी भी मैं बात कर रही हूँ तो कुछ बाहर आ रहा है, आई कैन फील इट, या सो बात करते वक्त, स्नीज या कॉफ करते वक्त जो निकलते हैं, दे आर स्टॉप्ड बाय मास्क्स आर ऑफ सेवरल काइंड्स. I'm specifically talking only about masks like this, which you and I can wear, yeah? This is a cloth mask. You see how beautiful design, it's got a beautiful design. You can get any design that you want, Superman, Spider-Man, any kind, yeah? Black Panther, whatever you wish. These things, even though it makes breathing and talking a little funny, you get used to it. It is extremely important to prevent these viral droplets from spreading and infecting another person. Please remember, these cloth masks, which we can wear in our everyday lives, will work only if everybody wears them. Yeah, I am wearing it not to protect me mostly. I am wearing it to protect you. So you need to wear it to protect me. Yeah, and these cloth masks, in terms of the material, are mostly, it's best to work with cotton masks because they're very breathable and stuff. These masks are different from what the medical personnel use. They use more specific masks that are required for use by them, because they are in settings जहाँ पे viral load बहुत ही ज़्यादा है, plus and उनका जो mask का material है वो थोड़ा अलग है. N95, like right now everybody knows the N95 word, right? Exactly, and we also know that single filter N95 masks are really not that good, and that particular thing has also been debunked, right? Just because you have a N95 with one filter, you can't feel like, yes, I'm the king of the world or the queen of the world, right? You need to be careful, because what you're sending out is not necessarily filtered. Maybe it will protect you, but it will not protect the other person. And what is interesting is many of these simple cotton masks that you can make at home, you see this hole. In this hole, you can put in a nice filter, and the filter paper also is readily available. And that particular thing will allow for a 3-layered protection, which cuts down the infection rate possibility by up to 70%. That has been shown by research that has come out of IIT Mumbai. So I hope this has answered your question of why it is extremely crucial to wear masks when you're in public settings. This, along with hand washing regularly and physical distancing, is extremely crucial in containing the pandemic. So please do your part in not spreading the infection. Okay. So we are almost done with today's session. Thank you for answering all these questions very interestingly. Thank you for all the visuals also, because it helps a lot understanding these ideas. And towards the end, we just hope that this mask question answers how
how public responsibility is the main thing that will allow all of us to get over this thing as soon as possible. Absolutely. Amen. Okay. And Thank you, for Sudha. having me. Thank you. Yes, thank you. Thanks a lot for the session. And we'll now go over to Ashok sir for the concluding of the session. Sure. Thanks. Thank you very much, Dr. Sudha, for answering these beautiful questions asked by the students and the teachers from the various schools. And Chaitanya for this conducting this session. Now the last part of today's session is, suppose if you have any question in your mind, please ask your question using the link that is available in the description box. Now, the next session will be on the next Sunday on the same time. So please don't forget to subscribe this our YouTube channel. See you on the next Sunday at the same time. Bye bye.